हाय एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट बेस का सीक्वल का एक प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हमें एक सिनेमा हॉल का डेटा दिया हुआ है। दिस पर्टिकुलर सीट आईडी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द सीट, दैट इज 1 2 3 4 5 6, and the free column will represent whether this particular seat ID is free or not. Okay, so we have to write a query to find the consecutive seat ID. ऐसे consecutive seat IDs निकालना है जो कि फ्री है। तो लेट्स सपोज फॉर 2 इट इज नॉट के आगे पीछे सीट तो खाली, बट 2 इज नॉट फ्री, सो 2 विल नॉट बी अ कंसेक्यूटिव सीट आईडी। फॉर 3 इसके पीछे तो सीट खाली नहीं है, बट इसके आगे खाली है, बट स्टिल इट इज नॉट कंसेक्यूटिव। बट व्हेन वी कम टू 4, फॉर 4 इसके पीछे तो सीट खाली है 1, एंड इसके नेक्स्ट सीट भी खाली है, so 3 will come into that consecutive series. Okay, so we have to write a query for that. Let's move into the SSMS. I have this training, so I have this database, I have this table called cinema, and using this cinema table what I will be checking that कौन से सीट आईडी, हर एक पर्टिकुलर सीट आईडी का पिछला और आगे का सीट खाली है कि नहीं। For doing that, what we will do, we will use this particular lag function. So we will write as select star lag. So I want the free column, okay, and over order by seat ID, okay, and I will name it as previous seat status. So basically I want to see the status of the previous seat, okay. And to know the status of the next seat, what we will do, we will use this particular lead function, and similar to the previous way, we will be using this particular lead functions and okay. Now if I want to check, अब मुझे पिछले और आगे का स्टेटस तो मिल गया, बट आई ऑल्सो वॉन्ट द सीट आईडी, बिकॉज अगर मुझे स्टेटस पता चल जाए कि पीछे वाले सीट का स्टेटस अगर फ्री है और आगे वाले सीट का भी स्टेटस फ्री है, so what we can do, we can for those seats we can get the previous seat ID and the next seat ID. Okay, so for that also what we will do, we will use the same lag and lead, but अब हम लोग free के जगह what we will start using this particular seat ID, and I will name it as previous seat ID. Okay, if I run it here, you could see that I am getting all the data. मुझे क्या मिल रहा है, इस पर्टिकुलर सीट आईडी के लिए प्रीवियस सीट का स्टेटस क्या था, तो आई डोंट हैव एनीथिंग, इट विल गिविंग मी नल, एंड नेक्स्ट स्टेटस विल बी 0, सो आई हैव दिस वन. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कीप दिस इनटू द सीटी टेबल. ओके, सो मैं इसको सीटी टेबल के अंदर रखता हूँ, एंड आई एम सेलेक्टिंग फॉर दोज आईडीज जिसका पिछला सीट स्टेटस एंड आगे का सीट स्टेटस 1 हो, along with उसका सीट स्टेटस बेसिकली फ्री होना चाहिए. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट select seat ID from CT where the previous seat status will be 1 equal to 1, and next seat status equal to 1, and the seat status and the free will be also, the current seat status should also be 1. Okay, if I execute it here, you could see that, okay, so previous seat status where previous 1. Okay, so I have given it multiple times, it should be next seat status, and this will also be the next seat status. Okay, so if I execute it here, you could see that I am getting 2 of them. Okay, means ये दो ऐसे सीट आईडी है जिसका ये दो सीट आईडी फ्री तो है ही, इसके आगे के और पीछे के सीट्स भी फ्री हैं. सो व्हाट आई विल डू, नाउ आई एम गेटिंग दीज, सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल डू, आई कैन यूनियन सम अदर रिकॉर्ड, एंड अभी तो मैं सिर्फ सीट आईडी ले रहा हूँ. इन नेक्स्ट यूनियन व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द previous seat ID, okay, and I will again union and find the next seat ID, and if I run it here, you could see that I am getting the exact output that 3 4 5 6 are the consecutive seats जो कि खाली है. Okay, so this will be the perfect solution for this particular problem.
if you have any other solutions or any optimized solution, please do share here. Okay, thank you so much.